Indian rupee will lose its interest. You will be more inclined towards having a cryptocurrency like holding something. I think we are experiencing a bull run already. Really in a bull run already. We are already in a bull run, and I am very much sure that after Bitcoin halving, you will see Bitcoin price may go up to 50,000. You can see that the Bitcoin price, which is currently hovering at 42,000 USD, will come down to 38,000 USD. But again, then after Bitcoin halving, it might go up to 43. सो सर लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर इंडिया में किस तरीके से है और ब्लॉकचेन किस तरीके से, बिकॉज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है और क्रिप्टो करेंसी उसका एक छोटा हिस्सा है. लेकिन ज़्यादा लोगों को जो इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, उन्हें ब्लॉकचेन का इतना नॉलेज नहीं है. तो आप प्लीज़ उन्हें एनलाइटन. Actually, if we talk about India, so India में क्या है? The first thing which requires attention is knowledge. We represent Blockchain Council. Blockchain Council is basically an education entity. So what I want to tell you first of all is that blockchain is a technology and cryptocurrency is an end product built upon the technology. Okay? Like if I have to give you a layman example, then क्या नाम है? Internet and website. Internet is a technology, website is an end product built upon internet. ठीक है? तो blockchain क्या है? एक decentralized technology है जिसके ऊपर cryptocurrency based है. ठीक है? So when I say कि क्या नाम है cryptocurrency और blockchain, so दोनों different चीज है. Indian government is adapting towards blockchain ecosystem. Okay? So Indian government is saying that yes, blockchain is good with respect to few aspects where they can implement blockchain in their framework. But when we talk about cryptocurrency, they are little skeptical because then Indian rupee will lose its interest. You will be more inclined towards having a cryptocurrency like holding something. You will be holding some Bitcoins, USD. Today, considering this thing that the prices may go up, like as you invest in stock market, you are very skeptical, you are very sure about it कि मैं टाटा का शेयर खरीदूंगी तो टाटा TCS का शेयर आज से 2 महीने बाद मेरे को इतना रिटर्न दे देगा. Likewise, cryptocurrencies में क्या है? There are cryptocurrencies which are well known to everyone and there are shit coins as well. There are lot of tokens which gets listed over exchanges. Okay? So हमारे इंडिया में there are good exchanges और there are big exchanges like WazirX, CoinDCX. ठीक है? तो इन exchanges ने अपने protocols को इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चेंज कर रखा है. But recently what happened is that Indian government has banned Binance. And other 9 offshore exchanges. And other 9 coin उसमें था, OKX था. So OKX, coin, they were not able to regulate as per Indian government's framework. Which said that, yes. So they did not agree to that. So abhi what happened is that Binance is non-operational here. ठीक है? But having said that, क्या future है cryptocurrency का इंडिया में? So considering one of the users and enthusiast about technology, I think blockchain has a great future in every country. Crypto is something which countries, government and the individuals, enthusiasts and individuals who are running these exchanges need to sit together and create a framework around it. अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें बोले कि हमें 8% टैक्स लेना ही लेना है every transaction and then there you are getting 30 and 3% cess apart from that as well, then it's a big task. ठीक है? So what we need to do is that we need to create certain framework by which we can say that cryptocurrencies is going to work in India. But if that does not happen and government is going to ban all these things, then I don't think so, because they are more inclined toward now CBDC, central and digital currencies. We have to bring in e-rupee. Individuals should understand. So first thing is that knowledge देना चाहिए हमें. इंडियन फ्रेमवर्क पॉलिसी मेकर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए क्या कर सकते हैं. दैट इज व्हाट आई कैन से. ओके, लेकिन एक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखा जाए, बिकॉज काफ़ी सारे लोग, इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर क्रिप्टो करेंसी, तो बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत से करना भी चाहते हैं.
तो उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता ब्लॉकचेन के बारे में, दे जस्ट हियर इट समवेयर और फिर वो इन्वेस्ट कर देते हैं एंड देन दे लूज मनी। तो लाइक ऐसी आप किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज लाइक स्ट्रिक्ट अबाउट क्रिप्टो करेंसी, वो आप अपने रेगुलेशन में लाना चाहती है इनको, इस वजह से उन्होंने ऐप्स को इंडिया से रिमूव कर दिया। लेकिन देयर आर पीपल जिनके फंड बाइनेंस पे पड़े हैं, कोकॉइन पे पड़े हैं, सो हाउ आर दे गोइंग टू टैकल इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके फंड्स पड़े हुए हैं दे शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये जो ऐप है वो बैन हो गई है, तो आप न्यू फोन पे या न्यू यूजर एज अ न्यू यूजर रजिस्टर नहीं कर सकते। बट ऑल दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग देयर बाइनेंस अकाउंट, इट इज वर्किंग राइट नाउ। इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आपका बाइनेंस अकाउंट है, आपके फंड्स पड़े हुए हैं बाइनेंस पे, तो वो अभी नहीं गायब हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज देयर। बट हैविंग सेड दैट, फ्यूचर पे क्या होगा वी डोंट नो, ओके। बट इफ यू थिंक कि मेरे को नहीं इन्वेस्टर करना है, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट विद रिस्पेक्ट टू crypto's implementation adoption, then that has to be aligned with government as well. So we as an end user can only work in that manner जो कि legally acceptable हो. So legally acceptable, as I was telling you about CoinDCX and WazirX, they are sitting with the with our politicians, with our legal framework team to understand what we can do. So Indian exchanges अभी चल रही है और वो चलती रहेंगी। And again, we as an individuals or as an end users investors will find out a way. तो अभी आपको बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट, बिकॉज पैनिक सिचुएशन में क्या होता है, सेलिंग एंड देन मार्केट क्रैश डज हैपन, बट वी डिड नॉट नीड टू वरी अबाउट इट देयर, बिकॉज यू नो अबाउट बिटकॉइन ETF, BlackRock has already come up with Bitcoin ETF. So there might be more such things which will come in near future whereby you can trust it. Trust is the main issue with जो कि आपको over a period of time you will be able to get. ओके, सो जैसे आपने कहा CoinDCX है, WazirX है, इंडियन एक्सचेंजेस तो इंडियन इन्वेस्टर्स के पास है ही ऑप्शन में, बट देयर इज दिस क्यूरी, हमेशा मैं देखती हूँ लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि या तो उनके इंटरफेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने फंड्स टाइमली निकाल नहीं सकते, उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, टैक्सेशन है वहाँ 30% अगर हमें टैक्स देना पड़ रहा है, तो दे वुड लाइक टू शिफ्ट ऑन बाइनेंस एंड यू नो ऑफशोर एक्सचेंजेस ओनली। तो इस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं इंडिया में? इस चीज को चेंज करने का एक ही ऑप्शन है, दैट वी नीड टू गेट इनटू समवेयर इन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच एन individual investor will be able to do it. Here the policy framework needs to be realigned as per what is best for the country, what is best for the economy, world's economy. It is not something जहाँ पे Indian government कहे कि नहीं हमें तो टैक्स करना ही करना है, हम करते रहेंगे, then end user Indian economy will over a period of time will get affected. So there has to be some middle point where we need to agree upon as an end user, as an investor, and as a policy framework individuals who are creating these policies. So in short, we need some kind of regulation. बट देन अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, बिकॉज ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी का मेन एजेंडा आने का यही था, सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन इसीलिए बनाया था बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट डिसेंट्रलाइज मनी। तो कहीं ना कहीं वो डिसेंट्रलाइजेशन अफेक्ट नहीं हो जाएगी रेगुलेशन से? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन इज अबाउट ब्लॉकचेन, कि ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी, मैंने फिर बोला आपको जी, इंडिया पे ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी विल बी समथिंग जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि हमारा फ्रेमवर्क जो हमारी करंट सिचुएशन है वो हो। बट एज अ क्रिप्टो करेंसी इट इज वन ऑफ द पार्ट जो कि प्रोबेबली वी नीड टू लुक एट कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बट नॉट फुली डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हर चीज का फुली डिसेंट्रलाइजेशन होना भी ठीक नहीं है, लाइक रेगुलेशन भी थोड़ा बहुत रेगुलेटेड उसको करना पड़ेगा, considering this thing that we are running an economy and we also need to understand this thing that our rupee should not fall drastically. हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए जहाँ पे 80% यूजर वहाँ पे वो हो जाए। तो गवर्नमेंट का वो वरी है, हमारा वरी है कि हमारा पैसा नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो देयर आर अदर वेज एज वेल मैम। या लाइक अदर वेज, वो अदर वेज आई अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डिस्क्लोज हियर, बट एज इंडियंस और एज एनी इंडिविजुअल्स वी हम जुगाड़ू हैं, हम जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं कि कैसे करना है। बट
अगेन अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क इस तरीके से बन जाए जहाँ पे एक इन्वेस्टर्स के लिए फायदा है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं बन पाएगा then over a period of time definitely individuals will move into something different. Yeah. So Bitcoin ETF भी देख लिया, like it is approved क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, like everybody is happy. So इंडिया में अगर हम अभी रेगुलेशंस देखते हैं तो क्रिप्टो मार्केट में आपको क्या लगता है यहाँ पर इंडिया में ETF के आने में बहुत टाइम लगेगा अभी? क्या हम चांसेस हैं ETF आ पाएगा इंडिया में भी? पहले एक्सेप्टेंस तो आ जाए. Yeah, true. दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी. ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए अभी पहले हमें एक्सेप्टेंस, ओपन माइंडनेस, अवेयरनेस, एजुकेशन. How many of us know about blockchain? How many of knows? Then why we exist? True. So blockchain council is basically for people who are not aware about the technology, what is Web3, what is AI in its own space, metaverse. Aajkal everything is going on a virtual platform. Whether it is gaming, shopping, anything that you are doing on an active basis, everything is actually turning into a virtual, space now. So this is where we enter as, experts. Okay. So we are a platform which will give you all sort of certifications, which will give you, not just good access to jobs, but एक अच्छा आपका एक portfolio भी create करेगा with regards to the technology आजकल जो आसपास है आपकी, right? हर एक को knowledge होनी चाहिए AI क्या है, true, right? There is ChatGPT अब हर एक job में use किया जा रहा है. बहुत नॉर्मलाइज हो गया ChatGPT. वी डोंट नो, काफी लोगों को नहीं पता है किसने आया है. इसे क्रिप्टो का आपने बताया, दैट क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट, दैट नॉलेज, ट्रेडिंग नॉलेज वो भी नहीं है. सो ब्लॉकचेन काउंसिल आपको वो प्रोवाइड करेगा, ट्रेडिंग एक्सपर्ट आपको बनाएगा. इफ दे कैन गिव यू नॉलेज अराउंड क्रिप्टो करेंसी के पीछे का लॉजिक क्या है, इसका व्हाट इज द एंटायर टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट, हाउ इट फंक्शंस, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट विल हेल्प यू टू मिंट मोर मनी आउट ऑफ एनीथिंग दैट यू डू. सो ये सारी चीज़ें, ये सारे नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आपको हम experts. So how one can join blockchain council and how they can get started with you, like so हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाइए blockchaincouncil.org एंड वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनर कोर्स, एक छोटा सा बिगनर कोर्स है जहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं है. एज अ नॉन टेक पर्सन ऑल्सो, I'm talking about a student also. एक बच्चा भी स्टार्ट कर सकता है to educate themselves on what blockchain is, what Web3 is, what AI is. तो beginner लेवल से स्टार्ट होता है, it goes to becoming an expert, जहाँ पे आप एक्चुअली उसको टेक बिल्ड अप करना है या फिर उसको एक सोल्यूशनिंग देना है या फिर उसको एक डेवलपर एंगल से देखना फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव, आप वो भी सीख सकते. दैट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव. आपने बोला लाइक स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जिन्हें ब्लॉकचेन के बारे में भी नहीं पता वो भी एनरोल कर सकते हैं. सो कैन वी सी इन इंडियन स्कूल्स दैट ब्लॉकचेन विल बी टॉट? एब्सोल्युटली. आई थिंक वी हैव आल्सो कोलैबोरेटेड. हमने काफ़ी जगहों पे कोलैबोरेशन की हुई है. हम यूनिवर्सिटी धीरे धीरे करके कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कॉलेजेस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम बच्चों को एजुकेट करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो दे हमारे कोर्सेज और उनकी पढ़ाई की जो नीड्स होती है वो हम दोनों को मिक्स करके वी आर ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग व्हिच इज क्रिएटिवली डन इन सच अ वे जहाँ पे स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपने खुद की पढ़ाई में ये एक अलग से इंटरेस्टिंग भी लगे रिडक्स कर सकते हैं. That's the main idea behind it. Ki students' education awareness. Once this comes into the picture, accordingly everything will come in line. And I think your organization is the very first organization that is doing such thing in India, because मैंने जितना सुना है ब्लॉकचेन काउंसिल जैसे आपने मुझे अभी बताया, तो आप ही लोग फाइट कर रहे हो कि हम भी अवेयरनेस दे पाए, बिकॉज हम सब अपने नज़रिए से कर रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी बेसिक कि आप कोर्सेज दो, लाइक स्कूल्स में भी पढ़ाओ. सो दैट इज द अवेयरनेस. वही तो बोल रहे कि आप पहले एक अच्छे से क्रिएट एन इकोसिस्टम एंड हैव सम एजुकेशन अराउंड. आपने एक बार ही पढ़ लिया कि उसकी बेसिक्स क्या है, फाउंडेशन क्या है, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है या फिर ऑपरेट कैसे करती है. उसके बाद इसके आसपास की चीज़ें जो हो रही जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएशन होगा, कुछ भी होगा, और NFTs हो गए. आजकल NFT मार्केट प्लेस में इन्वेस्ट करना है आपको, तो ये सब आप सीख सकते हो थ्रू आवर कोर्सेज. So my last questions and last two questions, like how do you see Bitcoin halving this year, or like when will we see a bull run? I think we are experiencing a bull run already. In a bull run already. We are already in a bull run, and I am very much sure that after Bitcoin halving, we will see Bitcoin price may go up to 50,000 USD. So that's something which we all are expecting. But as you know, Bitcoin
gives you unexpected things. So expect the unexpected with Bitcoin. But yes, as of now, we are already in bull run, which we are experiencing. But yes, we should not be getting into that dilemma where we are doing panic selling. Yeah, because it's all about demand and supply. So जस्ट मैं चाहती हूँ कि आप पैनिक सेलिंग एक बार बता दो हमारे ऑडियंस को, बिकॉज आई नो उन्हें पता है, बट जस्ट एक ओवरव्यू दे दीजिए लाइक हाउ यू शुड नॉट बी अ पैनिक सेलर. So panic selling is all about when you are not sure how exactly the market is going to work, and you take some decisions on your emotional sentiments or trends which you think, oh, this might be a thing that can do harm to me. So like as you were telling that there are 9 exchanges which are banned in India. So we all are skeptical that my funds, my XYZ money is lying there. Many people. So like you, there are millions of people in India who have this much of money invested in these crypto exchanges account. So there should not be panic around it. Rather, wait and discuss and just look at what your exchange is telling you and what exactly the government is telling. So again, if you will do panic selling, it can give you can see that the Bitcoin price, which is currently hovering at 42,000 USD, will come down to 38,000 USD. But again, then after Bitcoin halving, it might go up to 43. But definitely, we are sure that 50,000 USD is something which we can very easily achieve. So that's what we are saying, that panic selling, we need to get ourselves aware about how things are going on, and if needed, we can then manage our funds accordingly. But no need to be becoming a panic seller. That's a really great advice actually, because जितने लोग हमारे चैनल पे हैं और जितने भी हमें देखते हैं, they are like very obnoxious about this कि क्या होने वाला है, अब हमारे इतना बैन हो चुका है, क्या करें अपने फंड्स का. So I think इस एडवाइस के बाद उन्हें थोड़ा समझ आता है. हाँ, डेफिनेटली. देखो, जहाँ पे भी हम पैसा इन्वॉल्व होता है, वो एवरीवन गेट्स वरीड अबाउट. इफ यू विल इन्वेस्ट से 10% of your salary into something, then every second day or third day you need to look at your portfolio. हाँ, मेरा पैसा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, क्या हो रहा है. So that's a normal human tendency. But yes, again, I would just like to share this thing, that have trust, have faith in your government, have faith on these few exchanges which are there in business for last 5-6 years, and they are doing really well. So it's not something like a bubble which will burst out. Rather, it is something which is going to stay for a long term. True. So the last question is, I don't know how you're gonna say it, but what is your perspective on meme coins? Meme coins, again, I'm again sharing this thing, that knowledge. So understand what project it is, what sort of coin it is. We never knew that our own blockchain, Polygon, will do such wonders. Yeah, true. So Polygon, Indian blockchain, has done wonders in the last 2 years. That's huge for us. Yes, so that's a great achievement for India. Okay, so likewise, we are really not sure which sort of coin will come up. So whether it's a Dogecoin or probably XYZ coin which gets listed, you need to understand how good is the project, किस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं. Like आज से 1 साल पहले अगर आप सोलाना का प्राइस देखेंगे, वो $10 था. It's about $100 right now. Yeah. So if you have understood कि सोलाना ब्लॉकचेन पे क्या काम चल रहा है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, then you could have made कितना 50x, 80x, that huge. So again, meme coin में जहाँ पे भी आप invest कर रहे हो, do your own research. And those coins, when listed on any exchanges, you need to understand how the airdrop is happening, what exactly is the portfolio, how कितने coins issue होने हैं, क्या exactly इसका situation है, and then accordingly you will invest. But if you are a beginner, then definitely go for Bitcoin, Ethereum, or the blue chip currencies which are there. Thank you so much, sir. Any final thoughts you wanna just tell our audience something there? No, nothing. As I think that Be a smart investor. Yes. Take their courses and be a smart investor. Definitely. Become a certified individual by your own educating yourself. In India, what we do is that we don't invest in our own education. So invest in your own education to understand what different certification, what different technologies can do. And I think that every one of us will do wonders. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir.